So good morning student. So in previous video we already discussed about the coordinate geometry, basic concept of the coordinate geometry and the distance formula. So according to that video, the distance formula is distance formula, and that distance formula is if A having coordinate x1, y1 and B having coordinate x2, y2. So these are the 2 points in the given plane. Then the distance between these 2 points is given by AB is equals to square root of x1 minus x2 whole square plus of y1 minus y2 whole square. So by using this distance formula, we can find the distance between the 2 points. If the point A and B are there, or P and Q are there, R and S is there, means whatever the points are there, if 2 points are there, we consider the 2 points, and from these 2 points, the first point, the coordinate of the first point is considered as x1, y1, and the coordinate of the second point is considered as x2, y2. Now this formula is applicable where this formula is applicable. Now if we consider, we have to show that the point P is equidistant from Q and R. हमको prove करना है P is equidistant from Q and R. Then what we want to show? We want to show that distance PQ is equals to the distance PR. If distance PQ is equals to distance PR, then P is equidistant from Q and R. This is the one of the application of this distance formula. Second, there are 3 points, point A, B and C. If we want to show these 3 points are collinear, then what we want here? Distance AB plus distance BC is equals to distance AC. यदि distance AB plus distance BC is equals to distance AC, then we can say that B is in between A and C, or A, B, C are collinear point. Now again, the application of the same formula is we can show that the right angle triangle, isosceles triangle, scalene triangle and all other triangles we can show by using this distance formula. So first of all, we can see the isosceles triangle. For the isosceles triangle, isosceles triangle, isosceles triangle. अब ये isosceles triangle में क्या होना चाहिए? कैसे शो करेंगे हम लोग isosceles triangle में? We want to show that any two distance means triangle में means 3 sides है. अब 3 sides में से कोई भी 2 sides कैसे होने चाहिए? Equal. Means any two distance, any two distance, any two distance, or we can say that any two segments, any two length of the segments are equal, then the triangle is the isosceles triangle. कैसे सॉल्व करेंगे इसको? Means if the vertices of the triangles are given, then we first find all the 3 sides. All the 3 sides means if I consider A, B and C, this is of your A, this is of your B and this is of your C. This is of your triangle, okay? A, B, C. So what we want to show? First we find distance AB, distance BC and distance AC. And from these 3 distance, if 2 distance are equal, then we say that these are the vertices of isosceles triangle. If all the 3 sides are equal, then it is the isosceles triangle, and if all the 3 sides having the different length, then the triangle is the scalene triangle. Understood? Means by using the distance formula, we can find all the 3 distance, that is AB, BC and AC, and after finding AB, BC
BC and AC, we can identify whether the triangle is isosceles. यदि दो साइड इक्वल है तो isosceles. If all the three sides are equal, then equilateral triangle. And if all the three sides are of different length, then it is scalene triangle. Understood? After that, one more is, that is right angle triangle. The second one is right angle triangle, or we can say that right triangle. Right triangle. अब right triangle में आपको सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि जो तीन साइड आपने फाइंड आउट की है, उन तीन साइड में कोई भी एक कंसीडर करेंगे. AC square is equals to AB square plus BC square. जरूरी कि AC square is equals to AB square plus BC square हो सकता है कि AB square is equals to AC square plus BC square हो, या फिर BC square is equals to AB square plus AC square हो. Means if we prove the Pythagoras theorem, and for that we want to find all the three sides of the triangle, and after finding all three sides of the triangle, if the square of one side is equals to sum of the squares of remaining two sides, then these are the vertices. Means ABC are the vertices of right angle triangle. Now the third point, this is of your second point, and the third point is square. For the square, अब स्क्वायर का डेफिनेशन क्या है? If all the sides are equal, if all sides are equal and each angle is of 90 degree, then that quadrilateral is called as a square. तो स्क्वायर के लिए हमको क्या शो करना पड़ेगा? All sides equal, all sides equal. ये हो गया पहला, यानी all side equal. साथ में diagonals equal, diagonals equal. और एक कंडीशन है यहां पे कि ईच एंगल 90 डिग्री, ईच एंगल 90 डिग्री. ये तीन कंडीशन है. अब तीन कंडीशन में से मैंने कोई भी दो कंडीशन भी कंसीडर कर ली तो भी हम शो कर सकते हैं कि ये क्या है? स्क्वायर. मींस फोर वर्टिसेस आर गिवन. फोर वर्टिसेस मींस A, B, C and D. All the four vertices are given. So first we find all the sides of the quadrilateral. All sides of the quadrilateral means what? First we find AB, BC, CD and AD. Here all four sides are equal. If all four sides are equal, and another again the diagonals are equal, क्योंकि diagonal दो ही quadrilateral में equal होते हैं, एक है rectangle और दूसरा square. तो rectangle possible नहीं क्योंकि all side equal रहेंगे तो rectangle नहीं हो सकता, square ही बनेगा वो. Okay? Now another AC and BD, ये भी फाइंड आउट करना पड़ेगा. मींस आपको टोटल 6 लेंथ फाइंड आउट करना पड़ेगा, 6 डिस्टेंस फाइंड आउट करना पड़ेगा. आफ्टर 6 डिस्टेंस वी कैन आइडेंटिफाई whether AB is equals to BC is equals to CD is equals to AD and AC is equals to BD. Then we say that the quadrilateral is a square. तब क्या बनेगा? ये quadrilateral square बनेगा. अब स्क्वायर के बाद में आता है आपका रोम्बस. स्क्वायर के बाद में आता है आपका रोम्बस. फोर्थ आएगा आपका रोम्बस. अब रोम्बस कब पॉसिबल है? रोम्बस में एक ही कंडीशन है, इफ ऑल द फोर साइड्स आर इक्वल देन द क्वाड्रिलेटरल इज अ रोम्बस. मींस आपको केवल ये वाला कंडीशन यहां पे प्रूव करना पड़ेगा. मींस आपको फोर साइड फाइंड आउट करनी पड़ेगी, आपको डायगोनल फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है. Means if all the four sides are equal, then the quadrilateral is a rhombus. After that, fifth, parallelogram. Parallelogram. Parallelogram में only opposite sides are equal. Opposite sides are equal. Opposite sides are equal means what? If quadrilateral ABCD is there, this is of your quadrilateral ABCD, then either AB is equals to CD and AD is equals to BC. या तो हम लोग AB is equals to CD दिखाओ या फिर
और AD इज इक्वल्स टू BC दिखाओ। तो अपोजिट साइड यदि इक्वल होते हैं तो क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा रोम्बस। ओके, और बाद में लास्ट में आता है 6 वाला रेक्टेंगल। रेक्टेंगल, तो ये रेक्टेंगल में क्या होगा, अपोजिट साइड तो इक्वल होगी ही होगी, मगर साथ में diagonals are also equal. Means here if the quadrilateral is a rectangle, then AB is equals to CD and AD is equals to BC, ये तो रहेगा ही रहेगा, और साथ में क्या रहेगा, AC is equals to BD. Means diagonals are also equal. Means if the triangle is an isosceles triangle, तो कोई भी दो साइड इक्वल दिखाओ आप, तो isosceles triangle बनेगा। इक्विलैटरल के लिए आपको तीनों साइड इक्वल दिखानी पड़ेगी, मींस तीनों डिस्टेंस फाइंड आउट करना पड़ेगा। तीनों डिस्टेंस फाइंड आउट करके तीनों डिस्टेंस इक्वल नहीं है तो स्केलियन ट्रायंगल बन गया। उसके बाद में राइट एंगल ट्रायंगल, यदि एक साइड के स्क्वायर का स्क्वायर ये दो साइड्स के स्क्वायर के एडिशन के बराबर है तो पाइथागोरस से बोलेंगे कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। स्क्वायर कब बनेगा, जब ऑल साइड्स इक्वल रहेंगी और डायगोनल्स भी कैसे रहेंगे, इक्वल। उसके बाद में रोम्बस कब बनेगा, जब ऑल साइड्स इक्वल आएंगी तब रोम्बस रहेगा। पैरेललोग्राम कब रहेगा, जब अपोजिट साइड्स कैसे आएंगे, इक्वल, तब पैरेललोग्राम बनेगा। और रेक्टेंगल कब बनेगा, जब अपोजिट साइड्स इक्वल और साथ में डायगोनल्स आर आल्सो इक्वल, देन द क्वाड्रिलेटरल इज अ rectangle. Now we consider the examples. Now an example, determine if the points 1, 5, 2, 3 and -2, -11 are collinear. Collinear है या नहीं वो देखना है। अब points collinear कब रहेंगे? Now if I consider this is A, B and C, कब रहेंगे? जब दो डिस्टेंस का एडिशन यदि तीसरा है, then and only then the points are collinear. Okay, so here दो डिस्टेंस का एडिशन, तीसरा मींस क्या, डिस्टेंस AB, डिस्टेंस BC एंड डिस्टेंस AC, तीनों डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे हम लोग यहाँ पे। So first we consider the 3 points. Let A 1, 5, B 2, 3 and C we find as a -2, -11. So these are the 3 points. So first we find the distance AB, after that distance BC and after that distance AC. तो पहले हम फाइंड आउट करेंगे डिस्टेंस AB. So distance AB is equals to, you have the formula. Which formula is that? That is x1 minus x2 whole square plus y1 minus y2 whole square. ये फॉर्मूला हो गया हमारा, means x1 minus x2 whole square plus y1 minus y2 whole square. अब AB कंसीडर करना है तो A को बोलेंगे हम लोग x1 y1 और B को बोलेंगे x2 y2, बराबर। A को क्या बोला, x1 y1 और B को बोलेंगे x2 y2. Therefore that is of equals to, now see, just we put the values, x1 that is 1 minus 2 whole square plus of 5 minus 3 whole square. Therefore that is of equals to 1 minus 2 means -1, -1 का स्क्वायर plus 1 plus of 5 minus 3 means 2 और 2 का स्क्वायर कितना, 4, and that is of equals to square root of 5. This is of here 1. Understood? ये समझ गए आपको? वैसे ही हम लोग BC फाइंड आउट करेंगे। Therefore BC is equals to, you have the formula, that is x1 minus x2 whole square plus y1 minus y2 whole square. Now in this case B is considered as a x1 y1 and C is considered as a x2 y2. B को मैंने कंसीडर किया x1 y1 और C को कंसीडर किया x2 y2. Therefore x1 minus x2 whole square, x1 means क्या, 2 minus of -2, so 2 minus of -2 whole square plus of 3 minus of -11, 3 minus of -11 and its square. Now we make the calculation here. Therefore what we will get here, 2 minus of minus means plus, so 2 plus 2 4 whole square plus of here 3 minus of minus plus,
So 3 plus 11, 14 and its square. Got it? Therefore 4 का स्क्वायर कितना हो गया आपका? 4 का स्क्वायर 16 प्लस 14 का स्क्वायर आ गया 196. 196. Therefore that is of equals to square root of what we will get? 6 plus 6 12, 2 carry 1, 9 plus 1 10, 10 plus 1 11, 1 carry 1, 1 plus 1 2. So 2 1 2. This is of equation number 2. And the third one means what? AC. So for AC, A is considered as a x1 y1 and C is considered as a x2 y2. So A को हमने कंसीडर किया x1 y1 और C को कंसीडर करेंगे x2 y2. So फॉर्मूले से हम लिखेंगे x1 minus x2 whole square. So 1 minus of minus 2 whole square plus of 5 minus of minus 11 whole square. Got it? So that is of equals to what we will get? See, 1 plus 2 that is 3 whole square plus 5 plus 11 that is 16 and its square. Got it? Now 3 का स्क्वायर कितना? 9 और 16 का स्क्वायर आ गया आपका 256. नहीं आया तो आप कर सकते हैं 16 into 16. 6 6 is 36 carry 3. 6 1 is 6, 6 1 is 6, 6 plus 6 12, 12 plus 3 15. Okay, 15 5 carry 1, 1 1 is 1, 1 plus 1 2, that is 256. So that is of equals to 256. Therefore 9 plus 256, that is of equals to 9 plus 6 15, 5 carry 1, 5 plus 1 6 and this is become 2. So this is of your equation number 3. Now this is of your root 5, this is root 121 and this is 256. So addition of these two is not equals to this one. It means that सबसे ग्रेटर वाला कौन सा है यहाँ पे? AC. सबसे ग्रेटर कौन सा है? AC. और दो छोटे कौन है? root 5 और root 2/2. Therefore AB plus BC is not equals to AC. Therefore ABC are not collinear. Means यहां पे दो का एडिशन तीसरा नहीं है, दो डिस्टेंस का एडिशन तीसरा डिस्टेंस नहीं है, and that's why we are saying that this ABC are not collinear.